Vineet Pandey, and we have come live here. ये थोड़ा सा घर से live class है, so I have to do the arrangements. I'm not having any assistant with me right now. This is Vineet Pandey. It is a CUET special session, and we are going to deal with the idea of metaphysical poetry, and along with that, we will talk about John Donne. This is a special session for CUET PG students. Tomorrow, 10th January, we are starting the last batch for CUET PG exam. CUTPC exam dates are announced. This is the last batch. If you're still feeling to join and crack for University of Delhi and JNU, this is the best time to join. अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, JNU ज्वाइन करना है, तो CUTPC का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं. 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है. आइए इस टॉपिक को पढ़ें. Let's start with this. And as you know, I told you in my previous classes also that this is a special session for the students who are from small town. For the small town students, and along with this, the students who are preparing for the top universities, I'm going to be bilingual. मैं दोनों भाषाओं में बात करूंगा, यानी कि हिंदी में भी बात होगी, इंग्लिश में भी बात होगी, ताकि हमारे जो साधारण ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो छोटे छोटे गांव से हैं, कॉलेजेस से हैं, उनको जहाँ पे इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता, उनको समझ आ जाए. तो लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉपिक. आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स में जॉन डन सबसे इंपॉर्टेंट राइटर आता है. मेटाफिजिकल पोइट्री से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जो चैनल पे पहली बार डिस्क्रिप्शन आपके बहुत काम आएगा. तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, ये थोड़ा सा बड़ा पेन हो गया, इसको छोटा कर देते हैं. सो द टॉपिक टुडे वी हैव इज मेटाफिजिकल पोइट्री. मेटाफिजिकल पोइट्री, ध्यान दीजिएगा. द टॉपिक टुडे वी हैव इज मेटाफिजिकल पोइट्री. इन मेटाफिजिकल पोइट्री वी विल टॉक अबाउट जॉन डन. Because in net exam there are so many other writers, वो भी पेपर में आते हैं, but in CUET PG entrance level we can talk about this, that John Donne is the most important writer. Now, what is metaphysical poetry? First point, सबसे पहले important point note करो. Metaphysical poetry जो है वो actually Elizabethan poetry के just बाद start होती है. So it comes around Elizabethan poetry. Now, when Elizabethan poetry was dominated by some famous writers like Shakespeare, Marlowe, Spenser, Sidney. Elizabethan poetry was dominated by William Shakespeare, 154 sonnets, 3 long poetries. Then Edmund Spenser, he wrote Fairy Queen, then Shepherd's Calendar, Epithalamium, a lot of other great works. Along with that, Christopher Marlowe wrote lyrics and poetries, and Philip Sidney wrote a lot of poetries like Astrophel and Stella. Along with them, there were so many other writers. Like Michael Drayton was dealing with these things. Michael Drayton के साथ साथ बहुत सारे sonneteers आ गए थे. Nicholas Grimald was there, Yard was there, Surrey were there. So there were so many other writers and poets. Elizabethan poetry was dealing with some selected points. Write down these special points. The main crux of Elizabethan poetry was idealism. Elizabethan poetry की एक खास बात थी. Elizabethan poetry was dealing with idealism. And idealism means the perfection of moralities. Idealism in love, idealism in friendship, and idealism for nation, like being patriot, deshbhakt. So Elizabethan poetry was like, if they are dealing with love, it's true love, sacrifice, death, dying for the love. If they are dealing with friendship, like William Shakespeare has written about friendship, again it was the extreme level friendship, true friendship. Technically, Elizabethan poetry was same. एक जैसा poetry था. There were nothing new, no surprises. Now, the structure of Elizabethan poetry, they used to make prefaces. पहले introduction देते रहते थे. Preface बना के, then they would go for the main story, and there the gods were involved in the poetry. Gods same content से deal कर रहे थे. अब देखो क्या होता है. As Elizabethan poetry was dealing with the same kind of thing, in this genre, new poets emerged. अब यहाँ पे नए poets आते हैं. Now, who are these new poets? These are the metaphysicals. Meta means beyond, that you must have studied in your school books, college books.
and physical means the normal world around. So metaphysical, one of the most easy and simple definition that is given by the writers and in colleges and universities. Metaphysical, matlab meta means beyond, physical means world. Yes, you can go like this, but I'll tell you some important details. So first, write down this. This is very important. Metaphysical, meta means beyond, physical means world. Especially CUET PG के student, और if you are from UP PGT, अगर आपका UP PGT है, हरियाणा PGT है, हिमाचल PGT है, ये आपके काम का है. ये नेट लेवल नहीं है, नेट का लेवल इससे हाई होता है. इट इज नॉट नेट लेवल, इट इज नेट इज हाई लेवल. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB, TGT, PGT of any state, this is more than enough for you. Now, the first ever use of the word metaphysics, write down this word. The first ever word metaphysics was coined by Drummond. The famous writer Drummond coined the term metaphysics. Please remember this is, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, किसने ग्रुप कॉइन किया, किसने टर्म कॉइन किया. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. First ever word metaphysics was coined by this man Drummond. Now, after this is the coinage. Please remember this. The coinage. Coinage means word banana, coin karna. So coined by him. Now the second point. First ever use of this word in literary sense. अब literature में सबसे पहले use किसने किया? This has been used by John Dryden. Dryden used this metaphysics word in his famous quotation where he says, "Done affects metaphysics." Done affects metaphysics. ये सब पेपर के क्वेश्चंस हैं. Who said John Donne affects metaphysics? Dryden uses the phrase for the first time in a literary reference where he wrote, Donne was first in certain things, Donne affects metaphysics. Point याद रखना, point नहीं भूलना. Now, along with that, the proper reference of the metaphysical school. The metaphysical school was a group. The metaphysical school was a group coined by Dr. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson coined the group the Metaphysical School of Poetry. Write down this. The Metaphysical School of Poetry coined by Dr. Samuel Johnson. So जो पूरा coinage है Metaphysical School of Poetry, that is by Dr. Samuel Johnson. अब देखो ये this is also one of the most repeated questions. Students get confused at this particular question. Students बहुत सारे confused हो जाते हैं पेपर में. कैसे confused होते हैं? Because when this question comes, they ask the question, okay, who coined the group, the Metaphysical School of Poetry? Dr. Samuel Johnson. But then the question comes, Dr. Samuel Johnson coined the group Metaphysical School of Poetry in which of his work? So he wrote a famous work, Lives of Poets. Lives of Poets, 1779 to 1781. 1779 to 1781. Okay, Lives of Poets. Now, see this. In Lives of Poets, he wrote the life of 52 poets. So sometimes they ask a question that, okay, Samuel Johnson coined the group the Metaphysical School of Poetry in his Lives of Poets, especially when he was dealing with the life of John Donne. Here students make mistake. सबसे ज्यादा गलती यहां पे होती है, सबसे ज्यादा गलती यहीं की जाती है. लाइफ ऑफ जॉन डन में कॉइन नहीं हुआ है. इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन. लाइफ ऑफ Abraham Cowley.
The school metaphysical poetry has been coined in Life of Abraham Cowley. So आपको confuse करने के लिए, to confuse you, they always give the option Life of John Donne, so that all the students who will remember metaphysical, John Donne टिक कर दो. You don't have to do that. अगर आपको नॉलेज नहीं था तो इस बात पे जरूर लाइक करना. अब ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया सैमुअल जॉनसन और ये कॉन्सेप्ट क्या है. अब एक बात बताता हूँ. When Elizabethan writers like Shakespeare and other great writers were writing in a proper pattern, Elizabethans बहुत अच्छा लिख रहे थे. इन राइटर्स को किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया. These writers were ignored. Metaphysical writers were ignored. It is Samuel Johnson who talks about them after many years. एलिजाबेथन राइटर्स के बारे में ऑगस्टन राइटर लिख रहा है, प्री रोमांटिक राइटर लिख रहा है, तो लगभग 150-200 साल के बाद, आफ्टर 150 ईयर 200 years, सैमुअल जॉनसन टॉक्स अबाउट देम. बट आफ्टर सैमुअल जॉनसन, again the metaphysical poets were forgotten. Yes, after Dr. Samuel Johnson's metaphysical school of poetry, सबने पढ़ना बंद कर दिया. दोबारा से भूल गए लोग कौन से मेटाफिजिकल राइटर, कैसे मेटाफिजिकल राइटर, किसी ने नहीं पढ़ा. एंड हियर वी गो, थैंक्स टू Thomas Stern Eliot, famously called T.S. Eliot. Now, what happens? He wrote the famous essay, The Metaphysical Poets. The Metaphysical Poets. T.S. Eliot wrote Metaphysical Poets in 1921. The Metaphysical Poets by T.S. Eliot is one of the latest study, and it's only because of T.S. Eliot's study that we have metaphysical poetry in our school syllabus, college syllabus, university syllabus. क्या आपके यूनिवर्सिटी में मेटाफिजिकल पोइट्री एज सिलेबस था या नहीं था? मेटाफिजिकल पोइट्री आपके भी सिलेबस में होगा. यू मस्ट हैव रेड ऑल दीज राइटर्स. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ T.S. Eliot. After T.S. Eliot, Helen Gardner and many others have done the study on the metaphysicals. वो सब नेट का लेवल है, दैट इज हाई लेवल, दैट इज नेट लेवल, सो वी विल नॉट गो देयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉन डन, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑथर, सबसे इंपॉर्टेंट राइटर जॉन डन. (1572 to 1631). See, John Donne is one of the first writer, सबसे पहले राइटर्स में से है जिसने मेटाफिजिकल पोइट्री का एक अलग जॉनरा स्टार्ट किया. बट एट दैट टाइम इवन जॉन डन डिडंट नो दैट व्हाट आई एम डूइंग विल बिकम मेटाफिजिकल. जॉन डन को भी नहीं पता था कि हम जो कर रहे हैं वो मेटाफिजिकल होगा. पर्सनल लाइफ ये थी दैट ही वाज अ पुअर मैन. बेचारा बहुत ही गरीब आदमी था, बट इसके बहुत अच्छे दोस्त थे. So he was a poor man but dependent heavily on his friends. But then his friends also started dying one by one, and then he came with frustrations and wrote Anatomy of the World. बहुत एक वर्क लिखा इन्होंने. उसके बाद उन्होंने लेक्चर्स देने शुरू किया, रिलीजियस लेक्चर्स, डिवोशंस एंड ऑल. धीरे धीरे क्या हुआ, बिकॉज यू नो एक पर्सनल लाइफ का एक पॉइंट और भी है. पॉइंट ये है दैट जॉन डन वाज वर्किंग विद सम पर्सन एंड ही सीक्रेटली फॉर्म्ड एन अफेयर विद द नीस ऑफ दैट पर्सन. तो जिसके लिए काम करता था अपने बॉस के लिए, उनकी भतीजी से इसका एक अफेयर था और इसने चुपचाप शादी कर ली. बट इट इज सेड दैट द नीस वाज बिलो द एज, अंडर एज, 18 से शायद कम थी. प्लस बॉस को भी गुस्सा आ गया कि आपने चीटिंग किया है. सो ही वाज इम्प्रिजन्ड, इसको जेल में डाल दिया गया था. 8 साल के लिए जेल में था ये. आफ्टर 8 years व्हेन ही गॉट रिलीज्ड, he started delivering the lectures, religious lectures. इनका वे ऑफ कम्युनिकेशन वाज अमेजिंग. इनकी जो पावर ऑफ वर्ड्स है बहुत अच्छा था. एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट आफ्टर दैट ही हैड 13 kids, 13 बच्चे थे इनके. एंड समहाउ he fell in love with someone else. कहते हैं जॉन डन को किसी और से भी प्यार था, जिसके बारे में एक थ्योरी है. एक थ्योरी ये है कि जॉन डन शायद फिलिप सिडनी की सिस्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड था. फेमस राइटर फिलिप सिडनी, इनकी एक सिस्टर थी, तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कनेक्टेड था, बिकॉज जॉन डन डजंट रिवील द नेम. कुछ बुक्स में इट इज मैरी हर्बर्ट, कुछ बुक्स में it is Pico de la Mirabelle, but there is no confirmation about the name of the woman. But there is one confirmation that yes, somewhere John Donne was having an affair. John Donne talks about these things. The wife of John Donne was Anne Donne, the first lady he got married to. उनका नाम था, first she was Annie Moore,
But after getting married to John Donne, she became Annie Donne. There is a famous line. ये सब किताबों में नहीं मिलेगा, notes में नहीं मिलेगा. There is a famous line. John Donne, Annie Donne, undone. John Donne, Annie Donne, undone. So some people say that maybe it is a statement by the writer himself that he was not happy with his married life. John Donne, Annie Donne, undone. एक और राइटर ने कहा था डन इज डन अवे मोर इज नो मोर. किसी और राइटर ने कहा था डन इज डन अवे मोर इज नो मोर. एनीवे, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. वो हाई लेवल हो जाएगा, बहुत हाई लेवल हो जाएगा. नाउ लेट्स गो फॉर दिस मैन. सो John Donne has written some of the greatest works, and how he becomes metaphysical. See this. Go and catch a falling star. One of the most sensational poetry he has ever written. In net exam, we teach 13 to 14 poetry of John Donne in class. For CUET, 4 to 5 poetries are very important. And there are some 4 to 5 poetries for UPSC also. Go and catch a falling star. Now see, the spelling of go. Then this E. Then this. What is wrong? There is some spelling mistake? No, it is not spelling mistake. This is the habit of John Donne. John Donne, just like Chaucer, used final E. He had a habit of using archaic style. What is archaic style? Style, old English style. So John Donne, just like Chaucer also used to do that. They would have extra E, unnecessary, हर बात में E लगा देना. So this is the extra E, and that has been added. This is called archaic E, also called final E. Now, in every word, John Donne used to add these kind of letters, especially E, and this distorts the pronunciation. अगर हर वर्ड में ई लग जाएगा तो प्रोनाउंसिएशन का क्या होगा? What will happen to the pronunciation? If you are using E in every word, the pronunciation will have some different impact. Ben Jonson got angry. Ben Jonson को गुस्सा आ गया और Ben Jonson ने क्या बोला? देखो, कौन सा कलर लें? ये लेते हैं. I hope it's quite visible. Ben Jonson said, Donne must be hanged. Donne must be hanged for not keeping accent. Donne must be hanged for not keeping accent. This is a famous quote by Ben Jonson. ये कह रहा है कि जॉन डन हर वर्ड में ई लगाता है ना, तो सबसे पहले इसको फांसी चढ़ा दो. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू लाइव. कितने लोग लाइव हैं अभी? वाओ, ऑल ऑफ यू आर वाचिंग इट. राइट इट डाउन दोस्तों. ये जो लेक्चर में नॉलेज है ना, ये एक दिन का या एक किताब का नहीं है. ये किसी एक दिन का लेक्चर या किसी एक किताब का नॉलेज नहीं है. आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. इतने सालों से पढ़ाना, नई नई चीजें पढ़ना. एंड एट जॉन डन आई हैव read like in depth because it is in UPSC. तो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हैव 11 बुक्स ऑन जॉन डन. तो मुझे लगता है आई नो अबाउट हिज कंप्लीट फैमिली लाइफ. सारा पूरा खानदान पढ़ रखा है इनका. चलो, नॉलेज को सलाम, मेहनत को सलाम. आ जाओ. अब देखो, इन दिस पर्टिकुलर पोइट्री एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले मैंने आपको गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में एक खास चीज बता दी. ई, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. जहां पे भी आप पढ़ रहे हो अपने टीचर्स को पूछना कि सर ये एक्स्ट्रा ई क्यों लगाता है, उसे कहते क्या है, क्या रीजन है. बट पूछना सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए, किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं पूछना. अपने नॉलेज का घमंड नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब ध्यान से देखो. गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में ही सेज दैट गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. व्हाट इज फॉलिंग स्टार? अ कॉमेट, एक उल्का. कॉमेट कैच करना आसान है क्या? एक कॉमेट को, एक उल्का पिंड को कैच करना, एक एस्ट्रॉइड को कैच करना आसान है क्या? कैन अ ह्यूमन डू दैट? एक आम आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता. राइट, एक्सेप्ट रजनीकांत. रजनीकांत कैन डू. कॉमेट कैच करना नॉट पॉसिबल. देन ही सेज गेट द चाइल्ड फ्रॉम द मैंड्रिक रूट.
मैंड्रिक रूट इज अ प्लांट दैट लुक्स लाइक ह्यूमन बीइंग। कह रहा है एक काम करो, एक पौधा है जो इंसान जैसा दिखता है, हो सकता है कि तुम्हें एज अ फ्रूट उससे बच्चे मिलने शुरू हो जाए, यू कैन गेट अ बेबी फ्रॉम द प्लांट्स, दैट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। फिर कहता है यू कैन हियर द मरमेड सिंगिंग, आप मरमेड का सॉन्ग सुन सकते हो। व्हाट इज मरमेड? अ मरमेड इज हाफ वुमन हाफ फिश। कह रहा आप मरमेड का सॉन्ग सुन सकते हो। टेक्निकली मरमेड सॉन्ग इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स, ओके, दैट सुपरसोनिक साउंड, बट इज नो दैट इज पॉसिबल। अब देखो और क्या पॉसिबल है। हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट? आपको यह भी पता होगा कि डेविल का फूट किसने काटा था, यानी कि आपको अनसॉल्व्ड माइथोलॉजी भी पता होगी, आप ये भी जानते हो। देन यू कैन डू टाइम ट्रेवल, ये कह रहा है कि आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। You can see where the past days have gone. Then you have the eyesight to see the invisible. आपके पास ऐसी आंखें हैं कि आप गायब हुई चीज देख सकते हो। You can see, you can do the time travel, you can see the invisible. And then he says, you have the horse, fastest horse. And then you take the round of the world, 10,000 days, 10,000 nights. एक फास्टेस्ट हॉर्स भी ले लो, तुम कुछ भी देख सकते हो, इनविजिबल चीजें भी देख सकते हो। 10,000 दिन और 10,000 रात तक लगातार धरती पे घूमते रहो, फास्टेस्ट, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल, घूमना इज पॉसिबल, बट देन व्हेन यू विल रिटर्न, इसे दुनिया के चक्कर लगा के, व्हेन यू विल रिटर्न, यू विल कम एंड टेल मी। ये कहता है पूरी दुनिया घुमाओ, उल्का कैच कर लो, मैंड्रिक रूट से बच्चा मिल जाएगा, मरमेड का तुम सॉन्ग सुन सकते हो, दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, बट यू विल नॉट फाइंड अ वुमन ट्रू एंड फेयर। आपको एक सच्ची और लॉयल और प्यार करने वाली वुमन कभी नहीं मिलेगी। एंटी फेमिनिस्ट नहीं है, इट इज एंटी एंटी वुमेन। इसे दुनिया में सब पॉसिबल है, ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स आर पॉसिबल, बट वुमेन ट्रू एंड फेयर, ये कह रहा इम्पॉसिबल है, यू कैन नॉट फाइंड दैट वुमन। वैसे हम तो छोटे मोटे टीचर हैं, अदरवाइज ये मीम मटेरियल था, जोरदार मीम मटेरियल था, बट एनीवे अब देखो क्या होता है। See the nature of the writing. In Elizabethans, they used to talk about idealism. He's talking about some reality. And to talk about the reality, he goes for exaggeration. ये देखो, ये सब hyperbole है, exaggeration है। Exaggeration का reference लेके इस point को prove कर रहा है। To prove this point, he says all these impossible things are possible because there is no woman who is true and fair. This is the style of John Donne. This is the style of metaphysical, a new kind of style. I hope you understood. In metaphysical poetry, they are not going for the conventional style. Their styles are totally different. Here he says that if you find a woman, that place will become shrine. Right on this point. He says, by chance, if you find a woman who is true and fair, that place will become a shrine. वो जगह एक तीर्थ जगह बन जाएगी, यानी जाने लायक जगह हो जाएगी। बट ही सेज आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तीर्थ स्थान है, बट आज कल परसों कभी न कभी वो विमेन आपको धोखा देगी और चली जाएगी। ही सेज यू विल राइट अ लेटर दैट शी वाज ट्रू एंड फेयर बट नाउ शी हैज गॉन। सो ये कह रहा है इट इज टोटली अगेंस्ट वुमेन। क्रिटिक्स कहते हैं उसने अपनी वाइफ के लिए लिखा है। ही गॉट सो मच cheated or kind of frustrated with his wife that he wrote this kind of work. That was the example of metaphysical poetry with John Donne. आपको मेटाफिजिकल पोइट्री और जॉन डन का मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। इसके अलावा बहुत सारी पोइट्री जो आपको करनी है पेपर के लिए, वो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, सन राइजिंग। देयर आर सो मेनी कोटेशंस दैट आई विल टीच यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Elegy on his mistress going to bed. On his mistress going to bed. Death, be not proud. These are the main works for CUET PG
for net, ecstasy, canonization, flee, then good morrow, and there are some other great works, valediction, forbidding morning, वो सारे भी आपको पढ़ने पड़ेंगे. Nocturnal upon the St. Lucy's Day, ये सारे important works है for net. But for CUET PZ, मैं ये सारे lectures आपको डिटेल में करवाऊंगा. I will be teaching you all these things with the quotations. Sun rising, she is all states, all princes I. LED on his going, Mr. going to bed. Oh my America, my newfound land, safest heaven with one man manned. And then death be not proud, death, though some have called thee dreary, mighty, dreadful, but thou art not so, thou art dwelling in poison, sickness, war. हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Now there is a simple announcement for all the students. If you are from CUET PZ students, कल से बैच स्टार्ट है आपका. 10th जनवरी बैच स्टार्ट है. इफ यू आर फॉर नेट, अगर आप नेट स्टूडेंट हैं, नेट का भी सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है 10th जनवरी, यानी कि आज के वीडियो के हिसाब से कल. तो अगर ऐसे ही पढ़ना है, एंड इफ यू वांट टू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, so I have taught in University of Delhi and I'm full of confidence that yes, I can make you crack the CUET PZ entrance exam. आपके पूरे कंपटीशन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कितने टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं? तो फिर CUET PZ इंग्लिश अगर करना है 10 जनवरी से स्टार्ट है. दो जो वांट टू गो फॉर नेट 10th जनवरी से स्टार्ट है. इसके अलावा और किसी को कुछ भी पूछना हो, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू वांट टू टॉक, यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, दिस इज द नंबर. I personally handle this number. Tomorrow onwards classes will start. कल से classes start हो जाएंगी प्रॉपर बोर्ड पे. 0 से A to Z सारी चीजें वीडियो क्लासेस में होंगी. This is the time. If you want to join, I have this number with me. You can drop me a text. Thank you so much. And next lecture will be going for Virginia Woolf. Next lecture हम Virginia Woolf पे करेंगे. Stay tuned. Thank you so much.